Good morning, student. This is the this is a new chapter which we will discuss about this in this today's class. In this chapter, in this video, I will discuss about the human health and diseases, which are very important topic for all kind of exam perspective. Now, so let's before we start this chapter, I have already studied about the other chapters like biodiversity, human environmental issues, ecosystem, sexual reproduction in plants. So all this chapter has been completed. Let's talk about the human health and diseases. So question is that what is health? Clear? So health क्या है? The health is a state of well-being. So what is health? Health is a state of a well-being, not merely absence of disease. तो हेल्थ एक कंडीशन है, एक स्टेट है जिसमें बॉडी पार्ट्स काफ़ी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं एंड वो उस कंडीशन में वो डिसीज़ फ्री होते हैं. So this state is a sign of a good health. So whenever body work properly without any interruption, without any disturbance, that state of the body is called health. And if you talk about the WHO, so WHO is the World Health Organization, and this organization define this word, that is health. So what is health? According to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely absence of disease. So this is the definition of health according to WHO. सिंपली कोई भी कह सकता है कि हेल्थ क्या है. हेल्थ जब बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करे तो दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ. ठीक है. इस नाउ बट समटाइम the human sometimes the health is not work properly and get disturbed due to the certain kind of elements. So this element is known as a disease, and this disease, what is disease? Actually, in my point of view, disease is the condition of health in which the part of the body not functioning well. It suffers a lot of disturbance. That's why the health is not working properly. Clear? So it does not constant, it does not persistent. It is a condition in which the body part does not work properly due to the some sort of the external factors. So the disease is any interruption, is any disturbance of the normal structure and function of any body part. Clear? So this is known to as human as diseases. जब हमारे कोई बॉडी पार्ट, ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम डिसीज़ का फॉर्म लेते हैं. दिस डिसीज़ शोइंग अ लॉट ऑफ सिम्टम्स. क्लियर? So that kind of identification of the
of the of the आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच काइंड ऑफ डिसीजेस। ठीक है, बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी साइन के हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते कि डिसीज़ क्या होता है। तो इस डिसीज़ में ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ अनहेल्दी और माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, there are the some set of the symptoms which is showing the state, which showing the condition of different kind of diseases. Now disease defined as the malfunctioning of the body. क्लियर, सिंपली अगर हम कहें तो डिसीज इज अ malfunctioning of the body organ due to the one and more reason. Now this disease can be transmissible or communicable, or it may be non-communicable, non-transmissible. ठीक है, तो communicable or infection diseases, also known as the transmissible diseases, this kind of diseases get transfer from one organism to another organism by any mode of फैक्टर। ठीक है, तो कुछ डिसीज़ेज जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वो किसी भी तरीके, किसी भी फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिज़म को ट्रांसमिट कर होते हैं। तो दिस कम्युनिकेबल डिसीजेज ट्रांसफ़र फ्रॉम infected person to a non-infected person, and this may be it may be due to the several factors involved in the transmission of such kind of diseases. So what are the direct contact? So which kind of behavior showing the direct transmission or communicable of any diseases. So कैसे ये एक डिसीज़ इन्फेक्टेड और पर्सन से दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में एंट्री करता है, तो दैट इज़ द सेवरल मोड्स you can see in this book. The mode of transmission of disease through pathogens involve first direct transmission, and the second one is indirect transmission. Clear? So any diseases transfer from infected person to non-infected person with the help via the direct transmission or indirect transmission. So whenever any diseases transfer directly from infected to healthy person, that is categorized the direct transmission. And in direct transmission there is the whenever we contact directly, ठीक है, when two persons are contacted to each other or contacted directly, so they one person having a disease transfer such kind of diseases to other one. So that mode of transmission is known as a direct contact. तो अभी लेटेस्ट का एक एग्जाम्पल अगर हमने, तो दैट इज़ कोविड-19. दिस इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन of the diseases of the viruses from with direct contact. So whenever COVID persons involved in a direct contact with other persons, so this viruses get transmitted from one individual to next individual. Okay, so
direct contact. Next, droplet infections. Droplet infections means whenever we sneezing, we coughing. What will happen whenever we sneezing and coughing? A micro droplet uh, are released from our mouth, nose, clear, and in this droplet having a microscopic pathogens which are inhaled by some other person. So this kind of whenever transmission of diseases through the droplet, that is called uh, droplet transmission of disease, clear. Next, injuries. If any body having get injured from any kind of any sources, and there will be the bacterial population will grow in that injured part, and this is also a mode of transmission of the such diseases to the next one. And the animal bites is also kind of a direct transmission of some viruses, because we know that animals or our pets having the viruses in their salivary, in the salivary, ठीक है. तो whenever जब ये पेट्स जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए और अदर जो एनिमल्स होते हैं, so whenever they biting, they will bite to other persons, that person causes the diseases, suffer from diseases, and it also helping to transmit the diseases to other ones, clear. And the example of the biting from animal is rabies. Rabies is a viruses which are directly transfer from the animal to the human being, ठीक है. तो जब भी कोई एनिमल किसी ह्यूमन को बाइट करता है, तो उससे क्या होगा कि जो एनिमल्स के अंदर जो भी वायरसेस थे, उसके सलीवर में जो वायरसेस थे, वो अब उस पर्टिकुलर पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया. तो दैट इज़ नोन एज अ एनिमल बाइट ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड. नेक्स्ट जो होंगे दैट इज़ थ्रू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. क्या होगा कि जब हम कभी इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो बाय चांस एक इंजेक्शन किसी और पर्सन को लगाया गया है, और फिर उसी इंजेक्शन को दूसरे पर्सन पर अप्लाई किया गया है, तो क्या होगा कि जिस पहले वाले पर्सन से जो भी ब्लड उस निडल उस ब्लड था, तो उसमें क्या हुआ कि वो ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है. तो दैट इज़ आल्सो अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस. जैसे कि हेपेटाइटिस इज़ द मोस्ट severe, most chronical disease of in Asiatic region. Actually, the example of Asiatic region, because we also celebrate the Hepatitis Day to overcome this kind of diseases, which are severe diseases of the among the diseases. So hepatitis viruses transfer from the blood and blood product from infected person to the non-infected person by any kind of any fault. And next, through the placenta.
So whenever whenever this diseases transfer from through the placenta, and so whenever male and female contact to each other, so there will be the more chances to transmit such kind of diseases to other healthy one. So this is all about the different modes of the transmission of diseases. Clear? So the mode of transmission diseases includes direct transmission and indirect transmission. The direct transmission can be happen of direct contact, droplet infection, injuries from animal bites, through blood and through placenta. So all such kind of mode involving the transfer of diseases. क्लियर? अब एक तो ऐसे जो डिसीज़ेस होते हैं एनिमल से ह्यूमन में, ह्यूमन से ह्यूमन में, सो इस तरीके की जो ट्रांसमिशन होते हैं तो उसे हम इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल और ट्रांसमिएबल और इन्फेक्शियस डिसीज़. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़ बिकॉज ये एक से दूसरे इंसान में सेम काइंड के डिसीज़ को एक्सप्रेस करते हैं. अब पहले बुक्स में होता था कि एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है जिसको हम जूनोटिक डिसीज़ेस कहते हैं. सो जूनोटिक डिसीज़ेज में क्या होता है कि एनिमल से कोई डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस में. बट अब एक और कैटेगरी जनरेट हो गई है, दैट इज़ दी ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन डिसीज़ेस. जब कोई डिसीज़ ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है तो एक नया कैटेगरी है जो अभी रिसेंटली कोविड की वजह से हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. whenever a disease is transfer not directly. ठीक है, जब कोई डिसीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होकर के विच इन्वॉल्व द थर्ड इंटरमीडिएट. सो दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इज़ कॉल्ड vector. So indirect transmission includes vectors. So what are vectors? Actually vectors are the intermediate organism. ठीक है, any organism which helping to transmit the disease from one to next. That intermediate organism is called vectors. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट एजेंट. दिस वैक्टर is also known as the intermediate agent which helping to the transfer of the diseases from one person to healthy person. So this vector can be the house flea, can be mosquito. So these are known as a vector. तो हमने अभी रिसेंटली सुनते हैं कि मलेरिया हो गया, टाइफॉइड डिसीज़ हो गया, ये कहते हैं कि मच्छर काटने से होता है. तो एक्चुअली जो मस्क्यूटो है, द मस्क्यूटो एक्ट एज अ वैक्टर विच ट्रांसमिट द डिसीज़ इनडायरेक्टली फ्रॉम नॉन हेल्दी पर्सन, infected person to non-infected person. So this is the direct mode of transmission of any diseases through the vector. That is called indirect or non-communicable disease. This is also known as a non-infectious disease.
because why it is known as a non-infection, because it is transmitted via a vectors. So this vector includes the mosquitoes, cockroach, houseflies, and other. So this is all about the kinds of diseases and mode of transmission of diseases. Now uh, let's talk about the some diseases which are caused by the bacteria. Clear? And this is the communicable diseases. So let's talk about the bacterial diseases. When we know that bacteria present anywhere, it is present in soil, water, clear. So these are present in anywhere. If the water quality is not good, so what will happen, we ingest a lot of bacteria in the form of any uh, uh, when we intake the any kind of uh, food. So this bacteria entering into their body and causing the interruption, causing the disturbance in the internal body parts. So uh, a, a disease will caused. Now first disease is the typhoid disease. According to your book, you can see this disease is caused by bacteria. First example is typhoid. Typhoid is the bacterial diseases. अब आप कहोगे सर ये तो एडीज़ मच्छर की वजह से फैलता है. तो this kind of diseases is caused by the bacteria Salmonella typhi. You can see this is the causal agent of the typhoid, Salmonella typhi. This is a bacteria. Salmonella typhi is a bacteria which caused typhoid disease, and this Salmonella typhi found in a human feces. Clear? And it is an enteric fever, means it affect the intestine of the human body part. That's why it is called enteric fever. enteric, जहाँ भी enteric वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा that is related to the intestine of the stomach. So the fever, it due to the Salmonella typhi present inside the intestine, it causing the fever. Clear? Up to 8 weeks. And this is the important sign and important symptom of this diseases. टाइफाइड के बारे में सभी जानते हैं कि ये 3 वीक्स तक होते हैं, 3 वीक्स तक ये डिसीजेज होते हैं. एंड टू चेक विच काइंड ऑफ फीवर having suffered any person, so we use the Widal test. Widal test ensure and tells about the typhoid diseases. Clear? सो टाइफाइड डिसीज़ को हम लोग जानने के लिए वाइडल टेस्ट का यूज़ करते हैं. एंड सिम्टम्स क्या हैं इस टाइफाइड के? हेडेक है, मेंटल कन्फ्यूज़न है, एब्डोमिनल पेन है, वीकनेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है. सो ऑल दिस, यस, इंटेस्टाइनल परफोरेशन. So this is the important, because the typhoid, as we already told, that typhoid is a enteric fever. It is directly affect the intestine and spread. How the typhoid get transfer from infected to non-infected person? It is due to the contaminated food materials or water. If the water and food is not
good, it is unhealthy, or it is contaminated with some other kind of pathogens, that is the mode of transmission. ठीक है. So flies important uh, vector which are spread the typhoid diseases. ठीक है. तो fleas is the carrier of this kind of diseases. Now what is the treatment of this टाइफॉइड डिसीज़? एक्चुअली इसका जो ट्रीटमेंट होता है, पहले तो कोई भी डिसीज़ पर्सन को हमेशा आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड गुड प्रोटेक्शन against diseases from other family members or other persons. So patient isolate the patients and taking the vital test and give the antibiotics. And there is a vaccines are available for this, that is TAB vaccines. Clear? So this TAB vaccines provided immunity for 3 years. So all these this kind of treatment involved to overcome the typhoid disease. Now second disease is pneumonia. Pneumonia is very common to the childs. Clear? So pneumonia हमेशा चिल्ड्रंस को होते हैं, लेकिन कब ये एडल्ट में भी निमोनिया होते हैं. Now this pneumonia is the acute inflammation of the lungs. ठीक है. तो acute inflammation होते हैं लंग्स में, और क्योंकि जो वायरस होते हैं निमोनिया के, जो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, वो लंग्स पर अफेक्ट डालते हैं. सो द alveolar sac fill up with fluid and dead white blood cells. ठीक है. तो जो म्यूकस समझ लीजिए एक वाइट ब्लड सेल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से लंग्स को इन्फ्लेमेट करता है. And this due to the accumulation, due to the fill up with dead white blood cells, air space, the amount of air space will get reduced. That's why patients suffer with the reduced or inhalation, exhalation, breathing. So it suffers with breathing problem. Clear? And which kind of causal agent? It is the pneumococcal bacterium. This pneumococcal bacterium includes Streptococcus pneumoniae. Clear? So Streptococcus pneumoniae is the causal agent of the pneumonia. But other bacteria such as the Haemophilus influenza is also involved in pneumonia diseases. So Streptococcus pneumoniae एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया डिसीज़ कॉज करता है, और इसके अलावा भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी निमोनिया को बढ़ाता है. So this is the second example of the diseases. Now viruses और protozoans may also cause the pneumonia, लेकिन जो prominent causal agent है जिसको हम कहते हैं Streptococcus pneumoniae. Now this what is the symptom of this disease? हमने पहले ही बोला कि लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, तो इससे रिलेटेड है कि ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट चेस्ट पेन होते हैं, फीवर होते हैं, रैपिड रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है, एंड ड्राई कफ होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन होते हैं चेस्ट पेन, रैपिड रेट ऑफ ब्रेथ एंड ड्राई कफ. So these are the important symptoms of the pneumonial disease. ठीक है. If any patient suffer from the pneumonia,
this kind of symptoms helping to identify the pneumonial diseases. Clear? Now, which of the which of the organism involved to spreading or transfer the diseases? Actually, when any health person contact with infected such kind this kind of infected this kind of diseased infected person that will suffered with pneumonia. सो जब न्यूमोनियल पर्सन जो न्यूमोनिया इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, जब स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और कोई भी हेल्दी पर्सन उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर के उसको भी ये डिसीज़ हो जाता है. तो निमोनिया इज़ अ काइंड, इट इज़ द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. क्लियर? So inhaling droplet, these are the important mode of transmission of this kind of diseases. Now what is the treatment? And though it actually isolate the person and give antibiotics and x-rays to check the function of the lungs. These are the important treatment for the pneumonial diseases.